जितने भी पॉलिटिकल, इसलिए कि जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी इनडायरेक्ट टैक्स के इश्यूज सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। तो पॉलिटिकल विल इज़ इम्पॉर्टेंट। तो what we all, as well as certain professionals sitting in front of me as well, वो लोग भी इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जो पॉलिटिकल विल क्रिएट हो, जिसके नतीजे में वो जो मैंने आपको शुरू में तस्वीर बताई थी कि वरना आदमी पानी के अंदर चला जाएगा और लोग फिर उसकी नमाज जनाजा पढ़ रहे होंगे, तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर नीचे होगा फिर। तो दैट्स वाई व्हाट वी आर ट्राइंग टू हैव अ वर्किंग ग्रुप between ICAP and FBR team, और इन द पास्ट भी प्रोफेशनल्स ने बजट मेकिंग प्रोसेस में इनकी मदद की है, एंड दिस टाइम वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या इस किस्म की कोई चीज़ हो ताकि प्रॉब्लम नहीं हो। मैं कुछ चीज़ें यहाँ बोलता हूँ तो लोग कहते हैं कि अलग से महफिल होगी ICAP की, वो तो बाद में होगी, लेकिन स्मॉल थिंग बिकॉज रमज़ान इज़ कमिंग, ज़िंदगी को रमज़ान जैसा बना लो तो मौत ईद जैसी हो जाएगी। रमज़ान इज़ कमिंग, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रजब का चांद देखो तो दुआ करो कि रमज़ान मिल जाए आपको और उसके लिहाज से तैयारी करो। तो मेरी रिक्वेस्ट यही होगी एज ए ब्रदर, एज ए जो भी मुझे आप कह लें, छोटा भाई बड़ा भाई जो भी कह लें, मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि बी रेडी फॉर रमज़ान, तैयारी करें, बिकॉज दिस लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट। At the end, I am thankful to Almighty Allah, my parents, teacher, professor, including Shabbar Sahib, to be very specific, he is my mentor, and for providing knowledge, guidance, and courage. I am thankful to Rashid Ibrahim Sahib, who put the burden on my shoulder and then appreciated at all the levels. And I am thankful to my team who worked with me in long hours, especially कि जब मुझे आज 2 काम करने थे कि इस्लामाबाद से मैं आया और we work hard on Saturdays and Sundays. That lead to a conclusion कि मैं दोनों प्रोग्राम एक ही दिन में कर रहा हूँ, सुबह 4 बजे से अब तक आपके सामने खड़ा हूँ। उम्मीद है किसी वक्त गिर नहीं जाऊँगा, इसलिए कि फर्ग्यूसन ने हमें बड़ी अच्छी ट्रेनिंग दी है टू वर्क हार्ड। And I'm also thankful to brother Uwais Mukati, who is naturally ICAP fellow, and Adnan Mufti Sahab and Asif Harun, who is technically all-rounder. Asif, I appreciate Asif Harun Sahab, who is technically an all-rounder, or he was plan B for today as well. To be, मैं आपको honestly बताता हूँ कि अगर मेरी फ़्लाइट लेट हो जाती तो इनको मैंने चीज़ें तैयार करके दे दी थी, और he had to took over अगर मैं नहीं आता तो he was even ready to that extent, and we help each other in all the aspects. मेरा ख्याल में शायद तो तालियां नहीं बजाई, आसिफ हारून ने इतना बड़ा काम किया। इसके अलावा श्योरली रिस्पेक्टिव टीम्स जो हैं उन्होंने भी हेल्प की है सब जगहों के ऊपर। Last but not the least, I am thankful to all the worthy participants for enjoying this evening, and like the man who sees tomorrow with the upcoming budget, and surely hereafter purposes Ramzan too. Thank you and Allah bless you. Thank you very much, Asif. And yes, the life is very short, and I wonder that we will be able to implement all these recommendations in the short life in the tax laws. So with that, I think I am not a tax expert, but I just wonder whether the tax laws that we have in Pakistan are sufficient to put a check on this offshore business that we hear in the media. I'm actually, I have not seen any of the recommendations around those offshore legal structures, but whether or not that is needed, I am really not the right person to tell you. Since we have our past president, Mr. Shabbar Zaidi, in this session as well, so I just would like to request that if he can share his thoughts on some of the proposals that ICAP has made to the FBR briefly, so I think it would be good for all of us. Thank you very much. I was not invited and I will not take much of your time. I think Asif Harun and Asif Kasbati has covered all the aspects, and Ayaz Sahab will give a very small briefing
the briefing about on behalf of the FBR on this matter. He has been instructed, I believe, by his member to represent FBR. Sir, you are not a LTU here, you are FBR here, and I expect you to be to give I think the message the ICAP has been giving for a very long time, and in short, that message is that there are two sectors in the economy. One is the organized sector, and another unorganized sector. ICAP is generally represented by the organized sector, and the message we always give that all the burdens and all the regressions we see for the organized sector. So we all recommend in a very short that the policy recommendation for us from our behalf is that there should be organized sector or documented sector should not be the focus of tax collection. It will automatically generate revenue on the basis of the expansion of economy. The concentration should be on the unorganized sector and on a lighter side. As साहब हम तो जो देते हैं उसको आप देख रहे होते हैं, जब हम देते नहीं वो आपको पता ही नहीं होता. So the question is, this is very simple and this is very simple logic कि जो मैंने कागज दे दिया उसको आपने आगे पीछे घुमाया फिर. तो that's what I'm saying. The message is that and the second message the ICAP has been very strongly saying and that all the windows for the whitening of the schemes, all the windows for the whitening of the untaxed money, direct or indirect, they should be stopped. Asif must have covered it, 111.4 and other things. They should all be closed, because you can't have two things on the this side of the picture. The third thing which ICAP has been constantly saying to the community is that Pakistan is the only country in the world where you are disadvantageous if you corporatize. पाकिस्तान दुनिया का शायद वाहिद मुल्क है जहाँ पे कॉर्पोरेटाइज करने से नुकसान हो जाता है. विद होल्डिंग भी होती है, रेट भी ज़्यादा है, डबल टैक्सेशन भी है. तो कॉर्पोरेटाइजेशन जो है, आईकैप जो है वो कॉर्पोरेटाइज सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है. अल्टीमेटली इकोनॉमी भी कॉर्पोरेट सेक्टर को रिप्रेजेंट करती है. अगर कॉर्पोरेटाइजेशन नुकसान में चली जाती है तो एक्चुअली अल्टीमेटली इट गोज अगेंस्ट डॉक्यूमेंटेशन. द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज इन द वेक ऑफ आवर कलेक्शन एफर्ट्स वी हैव स्टार्टेड. And if you look at the first speech of Mr. Isaac Dar when he became Finance Minister, look at his first speech. He said that we will promote corporatization. And if you look, all these steps we are taking, they are against corporatization. So corporate rate is higher than the partnership, the corporate taxation, the withholding, everything is for corporate. So you are effectively discouraging the corporate sector. And the last thing which Arslan has said, and I will just cover it, that I have written an article in the paper yesterday in the Business Recorder, Panama League, a blessing in disguise for Pakistan. And I am very candid about it, and I say that I am not saying what will be the result, what will be the effect of it, but at least the Pakistanis have realized that tax is also an issue. The unidentified assets is an issue. The black money or whatever you call it, undisclosed money is an issue, and we have to tackle this issue further. This is a time to think about the identification of the assets. But let me give a very simple advice to my chartered accountant also, that there is nothing wrong in making an offshore company. There is nothing illegal in making investment in offshore company. हमने तो offshore company को गाली बना लिया कि मेरी offshore company है, कोई गाली है. Offshore company कोई गाली नहीं है, और ना offshore company का कोई source of money अगर वो white है तो उसका remittance भी कोई गाली है. The question is, and in this kind of discussions, we should lead these discussions which we are having in our society. Let that discussion be converted into a positive side, rather than mudslinging on the politicians, and they are spoiling. 99% of people who are talking about this have never
seen what the offshore company is. What does it mean by offshore company? ये बिल्कुल वही वाला केस है. ईरान का प्रेसिडेंट आया तो हमने शिकायत की कि रॉ वाले ये कर रहे हैं. उसने कहा बहुत 10 मिनट बाद मुझे पता लगा. उसने पूछा रॉ होता क्या है. The same case is this, कि what a lot of people who are talking about the offshore companies, they don't know what is meant by offshore companies. ये कैसे बनती हैं, क्या होता है. And I have written in my article कि generally offshore companies पाकिस्तान टैक्स बचाने के लिए नहीं बनती. ऑफशोर कंपनी फॉरेन टैक्स बचाने के लिए बनती है. ये बड़ी गलतफहमी है कि पाकिस्तान टैक्स बचाने के लिए ऑफशोर कंपनी बनाई जाती है. ये बड़ा गलतफहमी है लोगों के दिमाग में. ऑफशोर कंपनी बनाई जाती है मुझे फॉरेन टैक्स बचाने के लिए. पाकिस्तान में टैक्सेशन जो है वो रेजिडेंट बेस्ड है, सॉरी सोर्स बेस्ड है. इनकम पाकिस्तान में हो चाहे रेजिडेंट की हो नॉन रेजिडेंट की हो, दोनों टैक्सेबल है. सो इट्स अ वेरी रॉन्ग परसेप्शन विच इज कमिंग इन दैट ऑफशोर कंपनीज आर for the savings. Coming back to what Asif was saying, and I just conclude it, that we have said it and I reiterated in my various discussion, and I think this was also in the Reform Commission recommendation, that we have got a Federal Board of Revenue. These committees, these forums, discussion forums, these will not resolve the issue of intercorporate taxations, interprovincial taxation. We should have one. Other than the National Board of Revenue, we should have one National Board of Revenue, which should only be dedicated to settle the issues which are arising between the provinces. Because this is, and let me say it, and I said it in some other seminar also, that we feel कि ये provincial taxes लग गए हैं और सिंध ये कह रहा है, पंजाब ये कह रहा है और ये कह रहा है और गलत हो गया, 18 तरमीम गलत हो गई और NFC वार्ड गलत है. ये सब these are, in my view, are not right things. दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज हैं जहाँ टैक्सेशन के राइट प्रोविंस को भी होता है, फेडरल को भी होता है, और उसकी इकोनॉमिक और जोग्राफिकल पॉलिटिकल रीजंस होती हैं और उसको चलाया जा सकता है. कोई अनहोनी बात नहीं है. ऑस्ट्रेलिया से अभी आप आए होंगे. ऑस्ट्रेलिया में भी ये प्रोविंशियल के पास राइट है, कनाडा में भी प्रोविंशियल के पास राइट है. कनाडा में तो ये झगड़ा इतना बड़ा था कि कनाडा की डिवीजन का रेफरेंडम हुआ था इस बात के ऊपर कि कनाडा को डिवाइड होना चाहिए नहीं. सो व्हाट आई एम सेइंग, पाकिस्तानीज, एंड आई रीइटरेट एंड आई सेड कि जिस तरह पाकिस्तान में प्रोविंशियल टैक्सेशन डेवलप हुई है इन ओवर द टाइम, राइटली और रॉन्गली, उसका टाइम पीरियड और उसका जो जस्टेशन है वो बहुत बेहतर है बाकी मुल्कों से. इसी हॉल में एक सेमिनार हुआ था जब आई वाज अ स्पीकर, एंड द वर्ल्ड बैंक and the Americans and the Canadian and the Mexican and the Brazilian were sitting here, and I said to them, and I reiterate, that Pakistanis are more cultured than Australian and Canadian in the settlement of the interprovincial taxes. We have settled it very reasonably. 3-4 साल 5 साल कोई बड़ी बात नहीं होती किसी नेशन को चीज़ों को सेटल करने के लिए. सिमिलरली ये सिस्टम में चलने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है. मैं यार सब आपको आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि जो अगर हमने पाकिस्तान में, although I have never been in favor of amnesties, but I personally feel that the way we have run the country in the past, a lot of assets are unidentified and their values have tremendously increased. And a lot of Pakistanis have got assets outside Pakistan, and they are under constant threat of fatka and confiscation outside Pakistan. So अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट चाहती है कि वो इस प्रोसेस को कोई रीजनेबल जगह पर लेकर आए, तो आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव ड्राइव करनी पड़ेगी फॉर द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एसेट. उसको आप डॉक्यूमेंटेशन कह लें, एमनेस्टी कह लें, मगर आपको एक एसेट्स को बाहर रहने दें, उनको पाकिस्तान में डिक्लेरेशन कराएं, उस पर टैक्स लें और उनको वहाँ रहने दें. अदरवाइज पाकिस्तानीज बिजनेसमैन सारा दिन टैक्स चोरी के चक्कर में लगा रहेगा, कारोबार नहीं करेगा. Because we are in this business, we know how much time is spent in avoiding and evading taxes than doing the businesses. So we have to do on a new paradigm, and we have to start afresh.
We have to start afresh and think about it, because the Pakistan, I was in a seminar, I was in a discussion with the foreigners yesterday, and let me tell you, all of the companies in Pakistan, आप सारे देख रहे होंगे, रिजल्ट्स आ रहे हैं कंपनीज के, किसी कंपनी का बाय एंड लार्ज लॉस नहीं आ रहा, but still the companies are making profit, the banks are making profit, FMCG sector, everybody is making profit, but everybody is complaining, everybody is crying, things are bad, the media portrayed the country is in turmoil, so there's some gap somewhere. आप जितनी भी कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं आप देख लें, एक्सेप्ट अ फ्यू, सबके प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं, मगर पाकिस्तानियों की सबकी शक्लों में ऐसा लगता है जैसे कल तो बम फटने वाला है. The question is, the people are rich, some people are rich, and the masses are poor, and that difference arises because poverty और richness का दुनिया में एक ही तरीका है, वो है taxation on income base and then equitable distribution of wealth through taxation. There is no other way of distribution of wealth other than taxation. दुनिया में कोई और तरीका नहीं है. इसलिए जब कंट्री पुअर होता है और लोग अमीर होते हैं और कंट्री पुअर होता है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू टैक्सेस. देयर नो अदर वे. So the people are rich, the companies are making money, but at the same time the general masses are not getting the result because there is a gap of, I was talking to Yasab, there is a gap of 1,500 billion rupees in our balance sheet of the country, and it will increase 2,000 billion rupees in next year. So Pakistan's GDP is